Hello viewers, welcome to our channel Dan and Thakkal Law Network. And in our previous video we had a discussion about the classes of criminal codes or the classification of criminal codes, which is laid down in Criminal Procedure Code chapter 2 section 6. And today we'll discuss about the power of the judges or the power of the courts to give punishment or to give imprisonment and their power to impose fine. So chapter 3 section 27, 28, 29, 29A deals with the provision of the power of the judges to give punishment. So let's come on section 27 of Criminal Procedure Code. This section deals with the sentence which High Court or the Session Judge or the Sessions Court may impose. The High Court may impose any sentence which is authorized by law. मतलब सब्सटैंटिव लॉ में जो क्राइम के लिए जो पनिशमेंट है, हाई कोर्ट वही पनिशमेंट दे सकते हैं. देयर इज नो नीड ऑफ कंफर्मेशन बाय फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और एनीथिंग एल्स. हाई कोर्ट कैन गिव एनी सेंटेंस which is authorized by law. It may be death sentence or life imprisonment, and there is no limit for imposing fine for the Honorable High Court. And in Session Court, the Session Judge may give any sentences which is authorized by law. But in case of death sentence, when the Session Judge is giving death sentence, it must be confirmed by the concerned High Court of that particular state. तो सेशन जज कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, बट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस सेशन जज हैज टू टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट. एंड ये रहा फॉर सेशन जज और द एडिशनल सेशन जज. Both have the same power, the additional session judge and the session judge. So अब आते हैं assistant session judge. Assistant session judge can give any sentence which is authorized by law, but the sentence is not exceeding 10 years. मतलब assistant session judge 10 साल तक पनिशमेंट दे सकते हैं. अब आते हैं इन केस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पनिशमेंट दे सकते हैं अप टू 7 years एंड फाइन भी दे सकते हैं. तो ये रहा पनिशमेंट का प्रोविजन. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन गिव द सेंटेंस अप टू 7 years or not exceeding 7 years. Same for the ACJM, Additional Chief Judicial Magistrate, and they can give any amount of fine. There is no limit for imposing fine for the High Court, the Additional Session Judge, and for the Assistant Session Judge. तो अब आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन गिव द पनिशमेंट टिल 3 years. इसका मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन गिव द पनिशमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 years, एंड द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन इम्पोज फाइन अप टू 10,000. And in case of judicial magistrate second class, the judicial magistrate second class can give the punishment not exceeding 1 year. मतलब 1 year तक punishment दे सकते हैं. और the fine is up to 5,000 तक फाइन दे सकते हैं. They have the power to impose fine up to 5,000. And अब आते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट.
If we compare the power of the judicial magistrate second class and the executive magistrate, then we can see that the power of the executive magistrate is little more than the power of the judicial magistrate second class. Section 29A deals with the power of the executive magistrate. So executive magistrate give the punishment up to 3 years and can impose fine up to 5,000. तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस हमको देखने को मिल रहा है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास पनिशमेंट दे सकते हैं 1 ईयर तक, बट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन गिव द पनिशमेंट अप टू 3 years एंड द imposition of fine is same for the judicial magistrate second class and for the executive magistrate. So somehow the quantum for giving punishment is greater for the executive magistrate than the judicial magistrate second class. तो आज के ये टॉपिक में हम लोग का यही था कि the punishment or the power of the court to give punishment for the high court, for the additional session judge, assistant session judge, and for all the magistrate. So friends, if you have any doubts or any queries about any legal topics, then text me or text us on YouTube or Facebook and stay connected with us for more legal videos.